Hi everyone, and welcome back to my channel. It's time for another exciting journey through words and phrases. I'm here to help you boost your vocabulary and ace your next exam. Don't forget to take the test at the end of the video. Let's begin. Our first word is overhaul. Overhaul is a verb that means to examine thoroughly and make necessary changes or repairs. To renovate or revamp. सरल शब्दों में अच्छी तरह से जांच कर आवश्यक बदलाव या मरम्मत करना, नवीनीकरण या सुधार करना overhaul कहलाता है. Look at this example. The company decided to overhaul its outdated business strategies. मतलब कंपनी ने अपनी पुरानी व्यावसायिक रणनीतियों को सुधारने का निर्णय लिया. Synonyms for the word are revise, upgrade, while antonyms include maintain, neglect. हमारा अगला शब्द facets एक noun है. It refers to distinct aspects or features of something, especially when referring to its complexity. सरल शब्दों में किसी चीज की विशेषता या उसके विभिन्न पहलू उस चीज के facets कहलाते हैं. Look at this example. The issue has many facets that need to be considered in the discussion. यानी मुद्दे में कई विशेषताएं हैं जिन्हें चर्चा में ध्यान में रखने की आवश्यकता है. Synonyms for the word are aspects, features, while antonyms include whole, unity. Our next word, robust, is an adjective that means strong and sturdy, capable of withstanding harsh conditions or stress. In simpler terms, it means कुछ ऐसा जो मजबूत और टिकाऊ है, जो कठिन परिस्थितियों या तनाव का सामना करने की क्षमता रखता है. For example, the bridge is designed to be robust enough to endure heavy traffic and weather. मतलब पुल का निर्माण इतना मजबूत किया गया है कि यह भारी यातायात और मौसम से निपट सके. Synonyms for the word are strong, resilient, while antonyms include fragile, delicate. Next, we have ethical minefield. It is a noun that refers to a complex situation or issue full of ethical challenges, dilemmas, or controversies. सरल शब्दों में एक ऐसी स्थिति जिसमें बहुत सी नैतिक चुनौतियां हो, वहां बहुत सारे छिपे हुए खतरे या समस्याएं हैं, और जहां लोगों को सावधानी से व्यवहार करने की आवश्यकता है क्योंकि चीजें आसानी से गलत हो सकती हैं. For example, the decision to terminate the project was an ethical minefield for the company. मतलब परियोजना को समाप्त करने का निर्णय कंपनी के लिए एक नैतिक चुनौती था. Synonyms for the word are dilemma, controversy, while antonyms include clear, unambiguous. Our next word, coalition, is a noun that refers to an alliance or partnership formed by various parties or groups for a common purpose. In simpler terms, it means एक समान उद्देश्य के लिए विभिन्न पक्षों या समूहों द्वारा बनाया गया गठबंधन. Look at this example. The political parties formed a coalition to gain majority support in the election. मतलब राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव में बहुमत समर्थन प्राप्त करने के लिए गठबंधन बनाया. Synonyms for the word are alliance, partnership, while antonyms include rivalry, opposition. Next, we have deteriorate. Deteriorate is a verb that means to become progressively worse or decline in quality, value, or condition. आसान शब्दों में किसी चीज की गुणवत्ता या उसके मूल्य में या उसकी स्थिति में समय के साथ साथ कमी होती जाती है तो इसे अंग्रेजी में deteriorate होना कहते हैं. उदाहरण के लिए, the health of the patient continued to deteriorate despite medical intervention. यानी चिकित्सा के बावजूद रोगी की सेहत बिगड़ती रही. Synonyms for the word are decline, worsen, while antonyms include improve, enhance. Our next word, curtail, is a verb that means to reduce or limit something, typically by cutting back or imposing restrictions. आसान शब्दों में इसका मतलब है किसी चीज को कम करना या सीमित करना, आमतौर पर कटौती करके या प्रतिबंध लगाकर. Look at this example. The company had to curtail its expenses during the economic downturn. मतलब आर्थिक मंदी के दौरान कंपनी को अपने खर्चों को कम करना पड़ा. Synonyms for the word are reduce, limit, while antonyms include increase, expand. Our next word is expedite. Expedite is a verb that means to speed up or accelerate the progress or completion of a process or action. In simpler terms, it means किसी प्रक्रिया या कार्यवाही की प्रगति या पूर्णता को तेज करना. उदाहरण के लिए, the manager decided to expedite the delivery of the urgent shipment. यानी प्रबंधक ने अत्यावश्यक शिपमेंट की डिलीवरी में तेजी लाने का निर्णय लिया.
Synonyms for the word are accelerate, hasten, while antonyms include delay, procrastinate. Our next word, subjugation, is a noun that refers to the act of bringing someone or something under control or domination. In simpler terms, it means किसी व्यक्ति या वस्तु को नियंत्रण या प्रभुत्व में लाने का कार्य, उन्हें अपने अधीन लाना. Look at this example. The subjugation of a nation by a foreign power led to resistance from its people. मतलब एक विदेशी शक्ति द्वारा एक राष्ट्र को अपने अधीन करने से वहां के लोगों में प्रतिरोध उत्पन्न हो गया. Synonyms for the word are domination, conquest, while antonyms include liberation, emancipation. Grappling is a verb that means struggling to deal with or overcome a difficult or challenging situation. आसान शब्दों में किसी कठिन या चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना करने या उसे पार करने की कोशिश. For example, the company is grappling with financial losses and needs a turnaround plan. यानी कंपनी वित्तीय घाटे से जूझ रही है और उसे एक टर्नअराउंड प्लान की जरूरत है. Synonyms for the word are struggle, tackle, while antonyms include surrender, abandon. Unbridled is an adjective that means uncontrolled, unrestrained, or unchecked, without any limitations or restraints. सरल शब्दों में अनियंत्रित, बिना रोक टोक के, कुछ ऐसा जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो. For example, the dictator's unbridled power led to oppression and human rights abuses. यानी तानाशाह की बेलगाम शक्ति के कारण उत्पीड़न और मानवाधिकारों का हनन हुआ. Synonyms for the word are unrestrained, uncontrolled, while antonyms include restrained, controlled. That's all for today, everyone. I hope you found this video helpful. If you have any questions, please feel free to leave a comment below. And be sure to subscribe to my channel for more vocabulary tips and tricks. As a test, let's try to use all the vocabulary words we've learned in a single sentence. Can you tell me what this sentence means? The coalition of political parties worked together to expedite the overhaul of the country's deteriorating infrastructure while grappling with the ethical minefield of balancing development and environmental protection. Do you understand the meaning of all the words in this sentence? If not, please leave a comment below and I'll be happy to explain them. Thanks for watching.